Hi, morning. Good morning, sir. Morning. Okay, so we'll start the class now. So the last class we actually discussed how we can analyze this particular the drug likeness of a particular molecule and how we can actually see how to look around into various aspects of the other molecules like its pharmacokinetic parameters and other parameters. How is it going to get absorbed into the body, the bioavailability score, all every this kind of things. So today we're going to focus to a different aspect of this particular chapter, and that is to access the drug target. Now we know everything about drug, but the thing is that we actually have to have an understanding about the targets, right? I mean, which are the essential elements in the body that you can actually target through drug. Now, generally, proteins and nucleic acid are the two major drug target in your body. Now, why are proteins the major drug target? What do you think? Because protein is the building block of every substance in the body. Yes, you're right. Pro- Generally, what happens Protein is that provide a structure. Protein provide functions. not the structure. The thing is that protein actually controls every aspect in our body. Every Okay, aspect, yes, every sir. aspect of it, whatever function that you have to do, it is actually controlled by the proteins. So nucleic acid is there; it simply tells you how to do and what to do, and the proteins are the molecule that actually obeys that particular order. So if you have to digest a food, or if you have to kill some virus, bacteria, or if you want to analyze if your body is in correct condition or not, whatever the thing, whatever the matter, proteins are the what they do it. And generally, it is seen that every disease it happens due to the lack of protein or due to the overexpression of a particular protein. Sometimes what happens, a particular due to some genetic default or genetic defect, the protein seems to unfold, or the protein or the amount of protein that is required in the body is not produced, and these a shortage of a protein or sometimes causes that particular disease, or other way around, what happens, sometimes there are some changes in the genetic region, and as a result overexpression of a particular protein occurs, and you know that overexpression sometimes leads to various diseases in our body. So generally it is seen that any kind of thing, any kind of disease, proteins are the major target in our body. Now among proteins also there are various kinds of proteins in our body. We have cell membrane protein, we have cytosolic protein, we have mitochondrial protein. Now which among these three do you think is responsible for the disease majorly? And can you give me an example of these three kind of protein? Hello? Yes, sir. An example of these three kind of proteins? See, for receptor, what you have is the major receptor is the GPCRs, that is the G protein coupled receptors. These GPCRs are the major receptor in our body. Why? Because most of the cases, whatever you see, you have GPCRs. Now, and these GPCRs are actually the major target of a particular drug. Now, why GPCRs are the target of drug? Because it sits at the top of the signaling pathway. होता क्या है कि जब भी कोई करनी होती है कुछ बॉडी पे सिग्नल भेजना होता है तो इट फॉलोज अ पाथवे दैट इज सिग्नलिंग पाथवे, राइट? इन Yes, sir. दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट हैपेंस, देयर इज वन प्रोटीन, कोई एक एक्टिवेटर आता है, द एक्टिवेटर इज आल्सो ऑन अ प्रोटीन, it comes and sits Hmm. on the cell membrane receptor. Okay, and the receptor while binding to it or by unbinding to it, there are various kind of receptors. Sometimes the receptor, two proteins might bind together to give a signal, or two proteins might डिसएसोसिएट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से लगा हुआ था, अब वो छूट गया, इससे भी हो सकता है कि वो सिग्नल भेजे. तो वट एवर द मैटर इज, इट सेंड्स अ सिग्नल, and that signal is actually relayed by various proteins downstream. That signal is particularly relayed. Okay, now whenever they are relaying that particular signal, तो उसके बाद क्या होता है, उसके नीचे और एक प्रोटीन रहती है, and that protein actually then sends a signal to the protein C.
Now protein C again takes up the signal and relays the signal to protein D, and that's how the entire signaling pathway works. Okay. और इससे क्या होता है, एक सिग्नल अभी अगर वो कुछ जैसे कि कैंसर के साथ क्या होता है, द सिग्नल मेजर सिग्नल इज सेल ग्रोथ। तो कुछ प्रोटीन्स होती है जो सेल ग्रोथ को प्रमोट करती है और वो प्रोटीन्स की ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, एंड व्हाट हैपेंस, दीस आर द ऑन्कोजीन्स दैट गेट ओवर एक्सप्रेस्ड, एंड दिस प्रोटीन देन एक्चुअली ज्यादा हो जाती है। अभी अगर कोई शॉर्ट हाइट का है, उसे अगर कोई ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ प्रोटीन खिलाया जाए तो क्या होगा, उसका ग्रोथ होगा, राइट, बिकॉज द एंटायर एवरी सेल इन द बॉडी इज ग्रोइंग। बट इन केस ऑफ कैंसर दैट इज नॉट द थिंग, only a small section of population of cell actually grows। जैसे तुम्हारे हाथ का थोड़ा सा एक जगह पे ग्रो हुआ या लंग्स का एक जगह पे ग्रोथ हुआ, ऐसा होता है, एंड दिस कॉजेस कैंसर। तो इससे क्या हो गया, तो जो प्रोटीन जो रिलीज होता है ना वो होता है। तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जो प्रोटीन एक्चुअली ओवर एक्सप्रेस्ड हुआ है मैं उससे काट सकता हूँ, आई कैन किल दैट प्रोटीन, और व्हाट कैन आई डू, और आई कैन सिंपली कट द रिसेप्टर प्रोटीन। क्यों, बिकॉज रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ही तो वो पूरा सिग्नल भेज रहा है ना। तो अगर मैं रिसेप्टर को ही बंद कर दूं, यस, तो अगर मैं रिसेप्टर को ही बंद कर दूं, इफ आई स्टॉप द रिसेप्टर, तो क्या होता है, कोई भी सिग्नलिंग पाथवे नीचे नहीं आएगी एंड द एंटायर पाथवे स्टॉप्स। So that is why generally we tend to target the cell surface receptors. And after that we have this particular enzymes and all various kind of enzymes, because enzymes मतलब जैसे कि मैं कह रहा था कि एक protein, what happens, the protein actually dissociates to give you a signal. How do a protein dissociate? By the help of these enzymes. Now generally protease enzyme, phosphatases are there. yes, Phosphatase क्या करता है, yes, phosphatase simply एक प्रोटीन का, phosphate को remove करता है। हाँ, फॉस्फेट को रिमूव करता है, एंड दिस फॉस्फेट रिमूवल is a very good method of signaling relay। तो फॉस्फेटेस हो गया वो एंजाइम जो फॉस्फेट रिमूव करता है। तो वो कौन सा एंजाइम है जो फॉस्फेट लगाता है, जो जुड़ता है, काइनेज है सर। काइनेजेस, एब्सोल्युटली। So kinases and phosphatase have antagonistic behavior, but they work synergistically simply to keep the homeostatic balance in the system. Okay. Apart from it, you also have some other target, such as the ion channels. Now, what is the role of ion channels? Ion channel is symporter and uniporter. नहीं, उसका रोल क्या है? आयंस को ये परमिट करना, आयंस को परमिट करना, yes, it actually allows the ion to move in. Now this is also yes, important. Why? Because generally it is seen that in any disease there is a ionic imbalance. जैसे कि अगर तुम्हें कोरोना ये हो गया, कॉलेरा हो गया हो, तो कॉलेरा में क्या होता है, what happens in cholera? Do you know what happens in cholera? कॉलेरा से क्या होता है, जो पेट का होता है, डायरिया, डायरिया तो होता ही है, बट मेजरली क्या होता है वहां पे, हाँ, डिहाइड्रेशन और डायरिया होता है। बट डायरिया क्यों होती है, क्योंकि वहां पे जो उसका आयन चैनल्स है, दे सिंपली लैक द कंट्रोल, वो पूरा कंट्रोल भूल जाता है, एंड दे सिंपली स्टार्ट, वो फुल आयन प्लस पुश आउट करना शुरू कर देता है, एंड दैट इज व्हाई यू सी द ओनली मेथड बाय व्हिच द कॉलेरा टॉक्सिन, कॉलेरा का दवाई क्या है, यू ड्रिंक saline water, you drink boiled saline water. Why? Because the ionic imbalance is destroyed, and once the ionic imbalance is destroyed, then obviously you have nothing to do। तो क्या होता है, जनरली ये देखा गया है कि पूरा आयन चैनल की जो आयन पास होता है ना, आयन पास होता है जनरली इट इज वेरी सिलेक्टिव थिंग, और एक साथ एक ही पास होता है, बट डिस्टर्ब हो जाने पर
आयनिक बैलेंस का पूरा काम तमाम हो जाता है और पूरा एकदम होम्योस्टैटिस पूरा बिगड़ जाता है. So generally these are actually thing and these are actually thought to work in this particular disease cases. So generally we have drugs that actually comes and bind to this particular regions. There are drugs that comes and bind to this particular regions and they stop their work. अब तुम पूछ सकते हो कि अभी यार ड्रग्स को पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे बाइंड करना है, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दीज आर जनरली नोन इन सारी आयन चैनल्स, एंजाइम्स, जीपीसीआर, इन लोग की स्ट्रक्चर जनरली हमें पता है. That is why you can actually put and design a drug that can go and bind to this target. But there's a catch. The catch is that receptors control a variety of process. एक रिसेप्टर है ना तो बहुत कुछ काम करता है, ये बहुत काम कर लेता है. जैसे कि इट कैन एक्चुअली बाइंड टू अ, जैसे कि तुम्हारा जीपीसीआर कंट्रोल्स अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी. तो अगर तुम समझ सकते हो कि अरे मुझे तो एक ही ये वाला दवाई डिजीज हुआ था, मुझे तो उसमें भी जो ड्रग दिया तो वो भी जीपीसीआर में लग रहा है, अब डिजीज भी है तो इसमें भी जो दवाई दे रहा है ये भी जीपीसीआर को टारगेट कर रहा है. ऐसा क्यों? Sometimes drug for two diseases target the same protein. Why? ऐसा क्यों? Because they have same structure. No, not because they have same structures. Because that particular signaling pathway is responsible for those two diseases. Both diseases are different, but वो हो रहा है वो एक ही signaling pathway के लिए. And since it is happening to that signal pathway, generally we see that it is actually पूरा ही सिग्नलिंग पाथवे को बंद कर देता है. इसीलिए कोई भी डिजीज हो, ए या हो बी हो, दोनों ही ठीक हो जाता है. गॉट इट? नाउ जनरली व्हाट Yes. हैपेंस जनरली, but currently nowadays people are shifting their focus to design drugs that can target nucleic acid, and they are not also targeting or developing small molecules as a target. Why? Because they have a different issues. I have already discussed them, right? I've already discussed that how small molecules can actually uh, कैसे खराब हो जाता है, राइट? डिस्कस किया था कि उसका कितना ये है, मतलब प्रॉब्लम्स है. That's why Yes, people sir. are trying to develop various other kind of molecules. Now when I say various other kind of molecules, what do I mean? Various other kind of molecules means that peptides या फिर या other biologics. Now when I say biologics, क्या क्या होता है? Even the DNA, the small RNA, they also work as a biologic. मतलब DNA RNA biologic कैसे? See, the DNA RNA, now this is not that general DNA RNA. These are aptamers. Okay, these are generally known as aptamers. Now these aptamers are highly required to work in a particular system. और वो काम बहुत अच्छा से कर लेते हैं. अब कैसे करता है ना करता है, what is aptamer, that we will discuss later on. Okay, Yes, sir. और लोग बाद में पढ़ेंगे कैसे करता है. But these are generally that this particular lists all the small molecules, the biologics, okay, and the nucleic acids that is generally done and for the how they are done. तो जनरली देख सकते हो कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, आरएनए है, उसने आरएनए इंटरफेरेंस में काम लगाता है. जैसे एसआई आरएनए डेवलप करते हैं, एसआई आरएनए, इट एक्चुअली वर्क्स एज अ आरएनए इंटरफेरेंस. So rather than targeting that particular protein, we are targeting the RNA. Okay, हम आरएनए को टारगेट कर लिए बिकॉज द आरएनए इज गोइंग टू, आरएनए से ही तो प्रोटीन बनती है ना. Yes, sir. तो अगर आरएनए को हम टारगेट कर ले, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दे, देन ऑब्वियसली देयर इज नो प्रोटीन. प्रोटीन की कोई बात ही नहीं है. देयर इज नो प्रोटीन दैट इज गोइंग टू वर्क. प्रोटीन Hmm. तैयार ही नहीं होगी, है ना. Hmm. तो इसीलिए दिस इज द रीजन. अपार्ट फ्रॉम इट यू आल्सो यूज डिफरेंट प्रोटीन्स, ट्रांसफॉर्मिंग रिसेप्टर्स एज दिस पर्टिकुलर एज अ टारगेट क्लास फॉर दैट. ओके, बट है कि क्या हर कुछ चीज अच्छी टारगेट हो सकती है? इज एवरीथिंग अ गुड टारगेट? दैट इज द क्वेश्चन. मतलब कैन यू टारगेट एनीथिंग? मतलब कुछ भी हो, हर प्रोटीन को क्या हम टारगेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. Nice, sir. Because there are certain key characteristics, certain key property that must cater, that must be catered before I can target or make a particular object a target. जैसे कि ड्रग के लिए देख रहे थे कि हर कोई स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग नहीं होती है ना.
सिमिलरली हर प्रोटीन, हर न्यूक्लिक एसिड फ्रैगमेंट, हर कुछ भी टारगेट नहीं होती है. टू बिकम अ टारगेट यू हैव टू हैव सम मेजर characteristics. Yes. So what are those properties or what are those characteristics? The first thing obviously is that it must have a role, confirmed role in the pathophysiology or a disease modifying. It must be disease modifying. मतलब कि उस प्रोटीन के साथ डायरेक्टली उस प्रोटीन के साथ डायरेक्टली डिजीज की लेन देन होनी चाहिए. मतलब उस प्रोटीन, ये देखा गया है कि ऐसा देखना चाहिए कि वो प्रोटीन से ही डिजीज बनती है. If that is a particular disease, then it is happening due to that particular protein. Okay. अब बात है कि तुम कैसे पता चलेगा. सिंपली एक सिस्टम लो, देखो कि उसका प्रोटीन ये गड़बड़ है तो इसकी ये सिस्टम है. टेक अ डिफरेंट सिस्टम एंड सी द प्रोटीन प्रॉपर्टी. इफ द प्रोटीन इज इन अ परफेक्ट फिट कंडीशन एंड द बॉडी और द सेल इज आल्सो फिट, देन वी नो दैट यस, ये प्रोटीन तो डिजीज मॉडिफाइंग नहीं है. ओके. Because if a particular protein is not involved in the disease, can we target it? No. We can't target, क्योंकि कुछ उस प्रोटीन कोई दूसरा काम हो सकता है. अगर मैं कुछ बिना कुछ जाने ही प्रोटीन को टारगेट कर दूं तो क्या होगा, शरीर में दूसरे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना, दूसरा कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी. एंड दैट इज द थिंग दैट वी डोंट वांट. ओके. सो व्हाट इज द सेकंड? द सेकंड इज, सपोज तुम एक दवाई खा रहे हो. ओके. सपोज यू हैव टेकन अ पर्टिकुलर ड्रग, और दवाई खा ली, और देखा कि वो दवाई खाने से क्या होता है, तुम्हारा ठीक हो गया, शरीर ठीक हो गया. बट थिंग इज दैट हाउ डू यू नो? यस, द डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब क्या, वो जो तुम दवाई खा रहे हो, हाउ विल द ड्रग नो वेयर टू गो? हाउ विल द ड्रग नो वेयर टू एक्ट, वेयर टू बाइंड, है ना? दैट मीन्स उसे जानना होगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि हर शरीर की हर दवाई तो जनरली थ्रू आउट फैला हुआ नहीं है. जैसे कि व्हेन यू हैव फीवर, then the fever molecules are generally found in the blood. Then it means that generally it is present throughout the body. अगर तुम्हारे कोई हाथ पैर कहीं पे दवाई, suppose there is pain in your body. When you have pain in your body, then we generally know that yes, this particular pain might be associated with this particular thing. मतलब वो तुम्हारा हाथ में भी जो है, पैर में भी है, हेड में भी है, सारी जगह पेन रिसेप्टर सारी जगह पे फैला हुआ है. सो यू कैन यूज दैट कि हम लोग, या ठीक है, एक ऐसा दवाई बनाओ जो सारे पेन रिसेप्टर को नम कर दे. बट देयर आर सिस्टम स्पेसिफिक डिजीज, लाइक सपोज यू हैव लंग कैंसर, देन ऑब्वियसली यू कांट, हम क्या करते हैं, केमो लेते हैं, राइट? पीपल टेक केमो, एंड व्हाट हैपेंस इन केमो, दे सिंपली डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर सेल. नाउ when this happens, you can't simply destroy every cell in the body, can you? No. अगर वो बस तुम्हारे शरीर में नहीं गया तो क्या होगा, वो तो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा. And that we don't want. Do you want to destroy the entire system? We don't want. No. Okay. So it has to reach the particular system. जैसे कि target should be present in that particular organ only. ऐसा नहीं कि हर जगह पे है. That is the second thing. It should be very much system specific or organ specific. जैसे कि ये जो कोविड वायरस, why does the COVID virus affect only the lungs? Because a spike protein, receptor of a spike protein is generally present in lungs. Now, when you say generally, that means that it is also present somewhere else. कहाँ present है? It is seen that the spike protein कहाँ bind करता है? Receptor क्या है उसका? Spike protein receptor. चलो अब तो बता दो, ये तो अभी 2 साल हो गया, सबको पता है अभी. ये बात सबको पता है. ACE2 receptor. Remember? ACE2 receptor. It binds to ACE2 receptor. Okay. Now the thing is that अब स्पाइक प्रोटीन जो ACE2 रिसेप्टर है, ये लंग्स में भी पाई जाती है, हार्ट में भी पाई जाती है, टेस्टिस में भी पाई जाती है. So if it is present in hearts also, why the COVID virus is not affecting hearts but only lungs?
और हार्ट में तो और ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस जो हम लेते हैं वो सबसे पहले पल्मन में ही जाती है, यस, लंग्स में बिकॉज ही ऑफ द जाती मोड है। ऑफ एक्शन। ये जो ड्रग है इसका मोड ऑफ एक्शन है यहां से जाना, इसका मोड ऑफ एक्शन है तुम्हारा लंग्स पे एयरवे के साथ ये जाती है ना, और ऑब्वियसली इफ यस इट सर। कम्स थ्रू एयरवेज तो ऑब्वियसली इट गेट्स डिस्ट्रॉयड देयर ओनली, क्योंकि एयरवेज के हम्म। साथ आ रहा है मतलब ऑब्वियसली इज गोइंग टू रीच लंग्स एंड नोवेयर एल्स, एंड दैट इज व्हाई यू सी दैट पर्टिकुलर थिंग दैट जनरली COVID is affecting lungs, not heart, because वो heart में पहुंचता नहीं, it's not infected through blood, it goes through the airway. Okay, so that is why whenever we design a drugs, we tend to design a drugs of COVID का drugs कैसे बनाएंगे? We tend to design a drugs that can block the ACE2 receptor. So if it blocks ACE2 receptor, what's going to happen? SE2 unable to attach a spike protein. Yes, we're going to see that it is not binding to the spike protein. It is not binding to the spike protein, and that's what we're going to say. Similarly, the next thing that we know for a but अगर ACE2 receptor मुझे drugs bind करना होगा तो मुझे और क्या चीज चाहिए? मुझे और क्या चीज चाहिए? मुझे उसकी स्ट्रक्चर चाहिए, राइट? Specific structure, yes sir. Yes, I have to know the ACE2 receptor structure. So structure is a very important aspect. If we are to develop a drug, if you have to develop a molecule or organ specific or system specific or protein specific drugs, then we have to know the structure of the drug. So 3D structure should be available, because अगर 3D structure नहीं है, then you can't develop or design a system or Drug. protein specific drug. You can't develop. Okay. And next thing Yes. is that particular target that you select, it has to be assayable. Now, when I say assayable, what do I mean? SA means working in laboratory. Yes, working in laboratory. So how does this particular, मतलब इसका मतलब क्या होता है? It has to be assayable. क्या लेबोरेटरी में इसे आसानी से ऐसे किया जा सकता है? हाँ, मतलब लेबोरेटरी क्या में है? ऐसी कोई मशीन है एक्सपेरिमेंट जो इस इसको ऐसे प्रोटीन के करे? साथ आसानी से हम कर सकते हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम? The problem is there are few proteins which are not synthesized very easily. कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती है जो आसानी से सिंथेसाइज्ड नहीं होती है। ओके, दिस इज नॉट सिंथेसाइज्ड वेरी इजीली। व्हेन आई से सिंथेसाइज्ड मतलब, सिंथेसाइज मतलब सब, अगर देखो तुम्हें प्रोटीन के साथ काम करना है, देन यू हैव टू हम्म, प्यूरिफाई द प्रोटीन, हम्म, यू हैव टू प्यूरिफाई द प्रोटीन, बट नॉट ऑल प्रोटीन्स कैन बी प्यूरिफाइड। ऐसा बहुत प्रोटीन है दैट कांट बी प्यूरिफाइड वेरी इजीली, प्यूरिफाई होती ही नहीं है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रियली डिफिकल्ट टू प्यूरिफाई। और प्यूरिफाई अगर नहीं करें तो प्योर प्रोटीन हाई कंसेंट्रेशन में क्या हम ले पाएंगे? नो सर। We are not going to get pure protein in high concentration, and if we don't get pure protein in high concentration, what is going to happen? We will be unable to perform experiments. So that is the thing, you have to get pure protein in high concentration. कुछ प्रोटीन हो जाती है कि इजीली प्यूरिफाई हो गई, but you are not getting them in high concentration. So if you are not unable to get that in high concentration, you will be unable to develop that molecule. उसे हम लोग डेवलप कर ही नहीं पाएंगे. So this is the issue generally we have with particular protein. It has, we have to isolate it, we have to purify it, and not only simply purify, we have to purify it using high concentration. Because concentration अगर high नहीं हुआ तो protein ठीक से काम नहीं करेगी. The protein is not going to work properly. Okay. So that is the assay, because at the end of the day you have to prove, right, कि ये ड्रग लेके ये प्रोटीन कम हुआ और ये प्रोटीन कम होने से ये डिजीज कम हुई. So you have to prove it. How to prove it without experiment? So that is why there are several different proteins that we see. ये प्रोटीन तो बहुत बढ़िया प्रोटीन है, very good, but with using that particular protein we fail to develop a drug. We
we failed to develop a drug using that particular protein. Why? Because of this reason कि वो प्रोटीन प्यूरिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि जब मैं पीएचडी in my lab, actually I actually had a particular guy, भैया थे, so he actually worked 5 years to purify a protein, but he was unable to purify that proteins even after 5 years. तो 5 साल उसे लगे एक प्रोटीन प्यूरिफाई करने में, बट फिर भी नहीं हुआ, 5 साल के बाद भी उसका काम नहीं हो पाया, because it is so difficult to purify some proteins. Okay, really difficult. The second thing is that we have to have a particular protein which should have a promising toxicity profile, या फिर कुछ ऐसा प्रोटीन होता है जिसे तुम टारगेट करने से ना तुम्हारा पूरा सिस्टम ही, it is going to be fatal for the entire system. What these proteins are known as? There are few proteins which is highly toxic. If you simply enable or stop the action of that particular protein, is going to be toxic for your body, and their function is highly required for your body's survival. उस प्रोटीन को क्या कहा जाता है, या उस जीन को क्या कहा जाता है? Try to find out. Okay, I'm not going to answer this. ठीक है, बट कुछ प्रोटीन्स होती है, कुछ जीन्स होती है जिसकी हमारे बॉडी के साथ संबंध बनाया हुआ रहता है, मतलब कि उस प्रोटीन या जीन को तुम स्टॉप कर दो, then the entire system is going to collapse. Can you give me an example of such protein? Hemoglobin protein. Huh? Hemoglobin. Hemoglobin, very good answer. And apart from hemoglobin, any enzyme? Hormones and enzymes. Blood clotting enzymes. Now, blood clotting enzymes are generally not, they don't act as a target. But yes, you are right. Very good. Blood clotting enzymes. तो ऐसे ही कुछ enzymes है जो, और ऐसे कुछ proteins है जो, पर blood clotting में तो enzymes नहीं होती है. Sorry. These are proteins, not enzymes. So there are some proteins, some enzymes. जैसे कि कौन से pathway? Which pathway is required for your body survival? Glycolysis. Okay, like glycolysis. Yes, sir. Glycolysis is a thing that you can't stop. अगर तुम glycolysis को stop कर दे, immediately you are going to go to a shock and you are going to die. इसीलिए cyanide खाने से लोग मर जाते हैं ना, क्यों? क्यों मरते हैं? क्योंकि वो पाथवे को ब्रेक डाउन करता होगा सर. क्या? पाथवे को ब्रेक डाउन करता होगा. वो कहाँ पे अटैच करता है? किस प्रोटीन के साथ बाइंड करता है? It binds to the electron transport chain proteins. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद है? ग्लाइकोलाइसिस के बाद जहाँ पे एटीपी तैयार होती है, yes sir. उस पाथवे, उस प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को. एंड इफ since it blocks the electron transport chain, ETC को ब्लॉक करने से क्या होता है? The electron can't move forward and ATP is not produced and you are dead. You are simply dead. So that is why there are some proteins which have all the above mentioned properties, but still it possesses a high toxicity profile. It possesses a high toxicity profile. जैसे कि उसको तुम बंद कर दो तो पूरा बॉडी सेप्टिक शॉक में चला जाएगा and you are going to die. So, but we don't want it to happen, right? We don't want to kill the entire system, and that is why we don't target those proteins. Clear? और एक एग्जांपल हो गया जैसे कि हेक्सोकाइनेज इज अ प्रोटीन जो क्या करता है? which makes ATP. नो, हेक्सोकाइनेज देखो, ये ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्रेब्स साइकिल, दीज आर वेरी एसेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, बहुत बेसिक है, इससे बहुत अच्छे तरह से पढ़ना. इट डजंट मैटर व्हाट एवर फील्ड यू आर इन. You might be in informatics. Sorry, sir. नहीं, don't tell me sorry, but these are the few things. होता है, सब नहीं पढ़ता है.
but these are the information that you require wherever you go. कहीं भी सर तुम वो जाओ, these are the नेट few things that कनेक्शन you require. इंटरप्ट हो गया था। मैं बता रहा था सर कि ये हेक्सोकाइनेज जो होता है वो एडीपी में फॉस्फेट जोड़ करके एटीपी बनाता है। पार्शियली राइट, फॉस्फेट जोड़ता है पर एडीपी नहीं। कहाँ पे जोड़ता है? ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ओके, बनाने में, यस सर। इट converts glucose to glucose 6 phosphate. It adds a phosphate but to glucose. ठीक है, अब बताओ ग्लूकोज को वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों बनाता है? क्योंकि इसको खुद को चेंज करना, आइसोमर बनाना होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के रूप में। हाँ, तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो मतलब ग्लूकोज को फ्रुक्टोज बनाता, 6 फॉस्फेट क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज नेक्स्ट इसके नेक्स्ट लाइन में कौन है? हेक्सोकाइनेज के बाद आइसोमरेज है, राइट? आइसोमरेज सिंपली चेंजेस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब वो फॉस्फेट ग्रुप को नहीं चेंज कर पाता है, वो बस ग्लूकोज को चेंज करता है, फ्रुक्टोज को। कन्फर्मेशन को चेंज करता है। सो डायरेक्ट ग्लूकोज को फॉस्फेट फ्रुक्टोज क्यों नहीं कर रहा है? फॉस्फेट अटैच करने की क्या जरूरत है? सी देखो बात क्या है, whenever you have some proteins, देखो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज तुम्हारे आया, तुम खाना वाना खाए, पेट में गया, एब्जॉर्ब हुआ, चॉप डाउन हुआ, ग्लूकोज बना, वो फिर तुम्हारे सेल के अंदर घुस गया, राइट? यस सर। अब जैसे कि वो सेल के अंदर घुस गया, वो सेल से बाहर भी निकल सकता है, कैन गेट आउट ऑफ द सेल आल्सो। जैसे कि दरवाजा है घर का, तो तुम अंदर भी आ सकते हो, बाहर भी जा सकते हो। यस सर। कैन एनीवन स्टॉप यू? नो वन कैन स्टॉप यू। नो। सो हाउ टू, तो ग्लूकोज जो अंदर आया, अब वो बाहर चला गया तो सेल का लॉस। यस सर। So to prevent that loss, glucose adds a 6-phosphate to that particular thing. क्यों? फॉस्फेट ऐड करने से वो क्यों नहीं बाहर जा सकता है? थोड़ा सा सोचो। अरे कुछ भी आंसर हो, सही हो या गलत हो, बताओ, डजंट मैटर। क्योंकि इंटरनल मेम्ब्रेन के पास सर फॉस्फेट का रिसेप्टर नहीं होगा। नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा जो दरवाजा है वो क्या होता है? घर का दरवाजा एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल होता है, राइट? कोई भी आ सकता है, लंबा हो, नाटा हो, छोटा हो, मोटा हो, अंदर आ सकता है। बट सेल पे ऐसा नहीं है, सेल पे कोई दरवाजा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है? वहां पे मॉलिक्यूल स्पेसिफिक इंटरनलाइजेशन होती है। ऐसे कि वहां पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ओनली क्या करता है? वो ग्लूकोज को बाइंड करता है, अंदर छोड़ता है। इट कैन आइडेंटिफाई ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को पहचानता है। वहां पे अगर फ्रुक्टोज आ गया तो वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर फ्रुक्टोज को अंदर नहीं ले जाएगा, because it understands only glucose. So that is why once immediately as the glucose enters the cell, hexokinase attaches a phosphate group to the glucose, so it becomes glucose 6 phosphate, and the receptor, they fail to identify glucose 6 phosphate as glucose. उसे लगता है कि यार 6 phosphate लगा हुआ है, पता नहीं कौन है, इसे मत पकड़ो यार, ये नहीं है, ये ग्लूकोज नहीं है। ओके, so that it prevents the entry or binding of that glucose to glucose transporter, और वैसे ही वो बाहर नहीं जा पाता है, because glycolysis pathway में तो टाइम लगता है। So immediately ऐसे ग्लूकोज अंदर आया, ऐसा नहीं है कि वो ग्लूकोज पाथवे में घुस गया, it requires some time, and by that time sometimes the glucose can get out of the system. So to prevent it, it attaches a 6-phosphate group so that it can prevent the distinction of glucose. जैसे कि तुम आए मेरे पास, मैंने एक मूछे फूछे लगा दिया, अचानक से अगर मैं मूछे लगा दूं तुम्हें, तो क्या कोई पहचानेगा? नहीं सर, पहले तो नहीं पहचानेगा, अचानक से नहीं पहचानेगा, बिकॉज इनसाइड आवर बॉडी द बाइंडिंग इज हाईली स्पेसिफिक।
जो एंजाइम या रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होता है दैट इज हाईली स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक बाइंडिंग है। एक भी बाल इधर से उधर हुआ तो वो बाइंड नहीं करेगा। ओके, प्रोवाइडेड इट इज नॉट टू स्मॉल। एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस हुआ तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई, बट फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दे, इट्स अ वेरी गुड, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वो नहीं पहचान पाएगा और यू कैन सिंपली प्रिवेंट इट्स री एंट्री। ओके, इसीलिए वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। इसीलिए हर चीज में इन आवर बॉडी देयर इज अ फंक्शन। जो भी एंजाइम एक्शन होता है, कुछ भी हो रहा है, इट इज नॉट लाइक बस हाँ होता है, ऐसा नहीं कि होता है। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, और ऐसे लॉजिक क्या है ये जान के पढ़ोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। बिकॉज ट्रूली ग्लाइकोलाइसिस पाथवे मुझे पता है कब से याद है, ट्रूली जब से क्लास 12 से। क्लास 12 में भी मेरा था स्कूल में, अभी भी है। ग्लाइकोलाइसिस अ वेरी कॉमन पाथवे, पढ़ाया जाता है क्रेब्स के लिए, तो क्लास 12 में ही पढ़ाया जाता है, तब से मुझे यस याद सर। है। इट्स नॉट दैट वाई, क्यों मुझे अच्छा लगा था, लॉजिक जानना होगा क्यों हो रहा है। हाँ, लॉजिक मैंने बाद में जानी है, ऑफ कोर्स क्लास 12 में इतना सारा लॉजिक मुझे नहीं पता था, बट हाँ पढ़ना होगा। क्या बायोकेमिस्ट्री क्या पढ़ते हो, कौन सा किताब पढ़ते हो? बायोकेमिस्ट्री तो एक वोएट एंड वोएट का था, एक हाँ लेनिंजन का है। ठीक है, लेनिंजर या वॉइट एंड वॉइट पढ़ो, बहुत बढ़िया है। और सर मेन प्रॉब्लम ये है ना कि पता तो है लेकिन ये नहीं पता चल पाता है ना कि इसको अप्लाई कहाँ करेंगे। ये चीज प्रॉब्लम है मेरे साथ, ये बताने वाले की कमी रही मेरे साथ शुरू हाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, क्योंकि अप्लाई तो खुद पता कर लोगे कि कहाँ करना है, कहाँ अप्लाई एज सच इसकी एप्लीकेशन कुछ नहीं है। नो एप्लीकेशन, कैलकुलस पढ़ के तुम्हें ऐसा कोई नहीं है कि तुम एप्लीकेशन कुछ में मिल जाएंगी, बट दीज आर द फ्यू इंफॉर्मेशन दैट इज जनरली रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि दीज आर वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन एंड अ साइंटिस्ट एंड अ स्टूडेंट, मतलब दीज फॉर एग्जांपल थर्मोडायनामिक्स इज अ वेरी गुड थिंग। तुम बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हो, यू हैव टू हैव नॉलेज अबाउट थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्योंकि इसके बाद हम यस लोग सर। जब डॉकिंग वॉकिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हाँ थर्मोडायनामिक्स इज यूज्ड देयर, सो थर्मोडायनामिक्स का थोड़ा आइडिया रहना अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं कि तुम्हें सब पढ़ लो, मैथमेटिक्स याद है या नहीं, उतना नहीं, जस्ट थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा तो अच्छा है। सोचो समझे, बस यही, यस सर। यस। बस यही, इतना नहीं, ऐसा नहीं कि यार पूरा रट लिया, पूरा इक्वेशन याद है मुझे, पूरा सिंबल याद है, ऐसा नहीं, उतना नहीं, जस्ट थोड़ा सा बेसिक लॉजिक, बस इतना ही, क्योंकि किताब तो है ही। जब भी तुम्हें लगेगा कुछ है, गूगल भी है, यू कैन सिंपली टाइप इट एंड सर्च द आंसर। ओके, बट इफ यू नो द बेसिक लॉजिक देन अगर कोई कुछ बता रहा है तो यू कैन सिंपली हाँ अच्छा अच्छा हाँ ऐसे ही तो होता था, अच्छा इसके लिए ये हुआ, ये ऐसा तुम जोड़ सकते हो, समझे? यस ओके, सर। द फाइनल थिंग इज दैट कोई भी टारगेट लो, दिस पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक इज नॉट फॉर नॉर्मल एक्सपेरिमेंटर और रिसर्चर, दिस इज फॉर फार्मा कंपनीज, that the particular target must have a IP status. Now, what is IP status? Intellectual property status. इसका मतलब कि कभी कभी क्या होता है, कुछ फार्मा कंपनीज, कुछ प्रोटीन्स, वो लोग खुद का उनका जो डेटाबेस है, खुद का उनका जो रिसर्च है ना, वो बहुत ह्यूज है एंड दे डोंट मेक इट पब्लिक। वो खुद से रिसर्च करके ऐसे ऐसे कुछ टारगेट्स को पता कर लेते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, एंड दे यूज दैट पर्टिकुलर प्रोटीन एज अ टारगेट एंड दे डेवलप ड्रग्स अगेंस्ट इट। तो अगर तुम कुछ प्रोटीन की या फिर कुछ टारगेट की आईपी स्टेटस जाने बगैर तुम उसे काम किया, अब बाद में पता चले क्या ये इस प्रोटीन की या इस टारगेट की तो आईपी स्टेटस कंपनी वालों के पास है, उस दूसरे कंपनी के पास है, तब तुम कितना भी अच्छा डिजीज दवाई बना लो, नो वन इज गोइंग टू केयर बिकॉज उनके पास है वो टारगेट है। ठीक है, so this is the thing now, obviously you don't need required to know about this is only for pharma companies once you, अगर तुम बड़े हो गए अभी कहीं फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लोगे तभी तुम्हें ये बात लगेगी, नॉट बिफोर दैट। ओके, बिकॉज एकेडमिक में ये दिस डजंट वर्क। ये डिस्कस किया गया था सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोर्स वर्क में। ओह अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है, यस वेरी गुड। सर। अब देखो, now once you have identified the drug, now there are two ways to do the thing. One is reverse pharmacology। अब एक ही अभी तो मुझे ड्रग टारगेट आइडेंटिफाई करना है ना, राइट? आई हैव टू आइडेंटिफाई द ड्रग। Once I know that these are the criteria that I must look into my target, now the thing is that I have to identify the target. Now, how to identify the target? There are two aspects. One is just give me 1 minute. Okay.
After healing. Okay. Now there are two ways for drug target identification. One is reverse pharmacology, another is forward pharmacology. Now what is reverse pharmacology? What is forward pharmacology? देखो, in reverse pharmacology, what you do? First, you have to identify why the disease is occurring. We have to identify why the disease is occurring. ठीक है, मतलब कि अभी कुछ दवाई जैसे कोविड हुआ, तो we have to identify why the COVID is occurring. Because this is a particular virus. अब ये अंदर क्यों जा रहा है? Because it is interacting with this particular protein. Which protein? ACE2 receptor. So you know why it is occurring, how it is occurring, and then you develop a drug. अब मुझे पता चल गया कि ACE2 receptor. So now we develop a target or a drug against this ACE2 receptor. Understand? So this is the reverse pharmacology. Now what is forward pharmacology? In forward pharmacology, you are not concerned about developing or identify the target. You are not concerned about identifying a target. ऐसा नहीं कि I have to find the target first. No. What? You simply take a look into the natural products or any ligand that can be used to prevent that particular disease. For example, जैसे कि मलेरिया. पहले क्या होता था? मलेरिया तो होता था, राइट? तो मलेरिया होता था तो लोग क्या खाते थे? क्विनोन। क्विनोन नहीं, क्विनिन नहीं खाते थे. क्या खाते थे? एकदम पहले. हाँ, तुम ठीक ही बोले हो. They were taking quinine, but in what form? क्विनिन कहाँ पाया जाता है, बोलो? कौन से पेड़ में? क्विनोन भूल रहे हैं. क्विनोन, सिंकोना. हाँ सर, सिंकोना. सिंकोना. सिंकोना के पेड़. यस सर. क्विनिन, राइट? तो पहले क्या लोग क्या करते थे? इट्स नॉट लाइक दे वो लोग क्विनिन खाते थे. वो लोग सिंकोना का बार्क लेते थे. सिंकोना का बार्क खाते थे. यस सर. सिंकोना का बार्क लेके आए, उसे थोड़ा पीस के बोले कि हाँ हाँ पता है यार, ये दवा ऐसा बुखार आने से ये खाने से लोग ठीक हो जाते. तो पीपल डिडंट नो कि क्यों हो रहा है, और वो पता है कि हाँ ऐसा अगर ऐसा शिवरिंग फीवर आया तो यार ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा. दैट इज फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी. यू सिंपली सी कि ये खाने से ये ठीक हो रहा है. ओके. अब बाद में लोगों ने पता किया कि यार सिंकोना खाने से क्यों ठीक हुआ, इसके अंदर क्या है. सो दे एनालाइज्ड एंड दे फाउंड देयर इज अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कॉल्ड क्विनिन. So quinine is the particular product or the molecule that can prevent malaria. तो अभी so rather than eating the entire bark, तो people क्या किया, वो लोग they identified quinine, they synthesized quinine and they gave the quinine as a tablet to the malarial patient. So that is how the forward pharmacology works. जैसे कभी किसी को ठंडा लग गया तो पहले people लोग क्या करते थे, क्या तुलसी खा लो, तुलसी पत्ता खा लो, ठंडा ठीक हो जाएगी. अब तुलसी पत्ते खाने से ठंडा क्यों ठीक होगी? क्योंकि उसके अंदर लोगों को नहीं पता था. अब पता है कि उसके अंदर एक प्रोडक्ट है यूरोसोलिक एसिड. दैट इज द मेन प्रोडक्ट दैट कैन प्रिवेंट और दैट कैन किल द इन्फ्लुएंजा वायरस. दैट कैन एक्चुअली गिव यू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दैट. ठीक है. तो ये अब पता चला है कि ये खाने से ऐसा होता है, पहले नहीं पता था. तो फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी इज दैट अप्रोच वेयर वी डिडंट नो अबाउट द mode of action of a drug. We knew that this particular thing can actually help you prevent the disease. Bas, use it. But in reverse pharmacology, what we do, we are highly specific. You know, we have to identify the mode, why it is happening. किसके लिए हो रहा है? अच्छा, this protein के लिए हो रहा है. So now develop a molecule selective towards this protein. ताकि हम उसके बाद मॉलिक्यूल बनाए और स्क्रीन करें तो फाइंड आउट अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दैट कैन स्पेसिफिकली टारगेट दैट प्रोटीन ओनली. कि वो दूसरे प्रोटीन को ना टारगेट करे. ओनली इज वो टारगेट ओनली प्रोटीन है. It's not going to bind to protein B, C, D or any one else. Highly specific. So that is reverse pharmacology. Now, कौन सा ज्यादा बेहतर है? रिवर्स फार्माकोलॉजी. हाँ? रिवर्स फार्माकोलॉजी. हाँ, reverse pharmacology is much better. Why? Because that is more specific.
वो more specific है, and you know how the drug is working. So even though now since we are developing the drug, हो सकता है कि drug का कोई toxic effect हो, right? So once you know how it is working, कहाँ पे bind कर रहा है, उसके bind करने के बाद का scenario क्या होगा, since you know everything, you can predict or you can prevent the toxicity. But the other way around is forward pharmacology is also good. Why? क्योंकि पहले देखो फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी से ही हमें बहुत दवाई की सिनेरियो मिली है, जैसे कि अभी हम लोग पैरासिटामोल खाते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी. नो वन नोज कि यार पैरासिटामोल से क्या होता है, बट हाँ पैरासिटामोल को यूज करके हम लोग बहुत बहुत अलग अलग की दवाई बनाते हैं, सो दैट द फीवर गेट्स सप्रेस्ड, बिकॉज वी नो दैट इज सेफ. लाइक तुलसी से यूरोसोलिक एसिड, सो यूरोसोलिक एसिड एक्सट्रैक्ट लेके लोग अभी दवाई बनाते हैं, मिक्सिंग यूरोसोलिक एसिड विद समथिंग एल्स. So see that because they are safe for your body. Any natural products, they are safe for your body. Okay. They generally don't cause any harm to your body, provided they have medicinal impact. But there are very toxic molecules also found in nature. So you can't eat that or you can take that. तो इसीलिए हमारे ये ऐसा काम होता है. So the next thing that you have to identify is that target identification. So कैसे करें? So there are two options. First, either you want a target or you want a compound or you have a compound. Now if you want a compound, what is this pathway called? जहां पे मुझे कंपाउंड चाहिए, इसे क्या कहते हैं? अभी पढ़ा हमने पिछले साइड में. कौन सा अप्रोच है ये? reverse pharmacology. Yes, reverse pharmacology. When you want a compound, that is reverse pharmacology. So you have to identify the target. Then I want a compound. So obviously, for this is the reverse pharmacology. It is also known as target discovery, because we are discovering the target, right? And the other thing is we have a compound. We already have a ligand. So this is the forward pharmacology, where you already have a ligand. Now, main thing what we have to do target deconvolution. मतलब you have to see how it is acting. कहाँ पे bind कर रहा है? Because once you know how it is acting or the mode of action, then you can develop more specific ligand. है ना? कि अगर हमें पता चल जाए कि ये कौन से, I don't have to know how it is binding और किस प्रोटीन के साथ bind कर रहा है. I have to know which pathway it is actually inhibiting. क्योंकि अगर मुझे pathway तक पता चल गया कि this is the pathway that is inhibiting, then I can identify many more targets. अब मुझे पता चला कि ये pathway मतलब the protein must be on this particular pathway. मतलब अभी पहले मेरे शरीर के अंदर there are 20,000 proteins. I don't know कि कहाँ है. But once I identify a pathway, I know that I have this 20 proteins. अब इन्हीं 20 प्रोटीन या इन्हीं 5 या इन्हीं 6 प्रोटीन में से कोई एक टारगेट होगा. तो मेरा ये बहुत नैरो डाउन हो गया, राइट? So once it is narrowed down, then I have to go for the next step. What is the next step? The next step is target validation. Now what is target validation? Target validation मतलब टारगेट को पता करना कि ये टारगेट सही में तो टारगेट है और नॉट. मतलब सोचो अगर मुझे लगे AC2 रिसेप्टर, तो AC2 रिसेप्टर के ब्लॉक करने से कोविड नहीं होता है. ओके, वेरी गुड. बट यू हैव टू प्रूव इट, राइट? कि हाँ AC2 रिसेप्टर ब्लॉक करने से कोविड वायरस अंदर नहीं जा पाएगा. यू हैव टू प्रूव दिस थिंग, राइट? तो कैसे प्रूव करें इसे? तो इसे प्रूव करने के लिए बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रूव करें. So the thing is that you have seen two things. The first is target deconvolution, where you begin with a drug that appears efficacious and the target is identified in retrospectively. And then you have the target discovery. So this target deconvolution is the forward pharmacology approach, whereas target discovery is the reverse pharmacology approach. Now there is no meaning. मतलब कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है कुछ नहीं. Because according to Dr. Julian Huber, you know that he says that both of them are important. The main thing is that you have to get a drug. You have to get a potential drug. It doesn't matter how you find that drug. तुम इस तरह से ढूंढो या दूसरी तरह से ढूंढो. Once you find out a particular potential drug, that is it. People are concerned about the drug only, right? कैसे मिला तुम्हें हमें नहीं पता करना है कैसे मिला. The only thing is that you are using that particular drug. It has to be non-toxic and it is actually able to save people. So this is the approach that you have to take. Okay. Generally. And after you find this house, we have to discuss about the
target validation. And that is very important because before you can develop a drug against a particular molecule, you drug जो है बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, right? It requires too much of intellectual knowledge, too many of experiment, and too much of money. So before I can invest any of that, I have to be confirmed that yes, this particular target is highly efficacious. इस टारगेट से ही ये दवाई बनानी होगी, इस टारगेट को इनहिबिट करने से ही ये डिजीज ठीक हो जाएगी. दैट वी हैव टू नो, राइट? So that is target validation. So that's what we'll discuss on the next day. What is target validation, how to do it. But do you have any idea कैसे करें? Do you have any idea कि कैसे करें? नो सर. नो, ठीक है, कोई बात नहीं. तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे. हाँ बोलो बोलो. सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो आयुर्वेदिक जो ड्रग्स होते हैं, कैन आयुर्वेदिक ड्रग्स आर लाइक फॉरवर्ड फार्माकोलॉजी अप्रोच? Yes, all Ayurvedic drugs are forward pharmacology approach. Oh, All, any natural sir, products or any Ayurvedic, they are all forward pharmacology approach. but it is very hard to design such type of drug, sir. It's very hard It's to. very hard to design such type of drug. No, देखो, obviously now it depends upon the lab that you are in. कैसे कर रहे हो ना कर रहे हो, इस सब के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम दवाई कैसे बनाओ. Obviously it is hard, but that is why people are, लोग पैसे भी खर्च करते हैं उतना. कोई कंपनी में जाओ तो साइंटिस्ट को उतना ही पैसा मिलता है. Why? Because that is hard job. लोग करते हैं हार्ड काम करने के लिए तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, है ना? एंड इट्स आल्सो ट्रेनिंग सर पार्ट. हाँ बताओ. वो बुक जो थी सर, वो बुक काफी महंगी है सर, वो 12,000 की है. अच्छा, तो उसका पीडीएफ कहीं अवेलेबल भी नहीं है सर. पीडीएफ अवेलेबल नहीं है? नहीं सर, पीडीएफ भी अवेलेबल नहीं है उसका. सब ओके में ओके. और में तो और ज्यादा यूरो में और डॉलर में पैसा ले रहा है. हाँ हाँ, वो तो होगा. स्प्रिंगर की है ना सर वो. हाँ वो तो होता है, वो उन सब किताब की बहुत कीमत होती है, बहुत कीमत होती है. तब सर फिर उसके लिए, क्योंकि ये पढ़ना जरूरी है सर हाँ हमको. ठीक है, तो मेरे एक अंदर काम करो, ठीक इंटरेस्ट है, है मैं देखता हूँ और लेकर के. दूसरी क्या किताब है, मैं देखता हूँ फिर भेजता हूँ. ठीक है. अच्छा. ओके, ठीक है, तो आज इतना ही. हाँ सर, ओके, थैंक यू सर.